called ball sack. Okay, listen, we're not gonna dance too hard today because today is not a normal day. Today is a different kind of day. No, it's no one's funeral. Today is a special day. Today I'm getting vaccinated. I'm getting the COVID vaccine first dose today. So I probably shouldn't make myself sick already with all the wild jumping and dancing. And also it's kinda early in the morning, so the engines inside my body hasn't fully started working yet. And by early in the morning, I mean 9 a.m. Yes, 9 a.m. is early for me. Come on, it's 2021. Give me a break. Things changed since March 2020. मेरे पापा को already 2 doses मिल चुके हैं because he fell under the above 45 criteria. My cute old man. He and my mom are gonna get it today. Yes! I'm so excited to get the vaccine. Weirdly, ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि all this time I was walking into a battlefield and I didn't have any weapons and any armor, but now I'm gonna have the armor on. Does that make sense? Only if the whole country was this excited about getting the vaccine. It's weird how when the vaccine was still not invented, everyone was like, yeah, ये क्या, ये लोग वैक्सीन नहीं बना पा रहे, हाँ, क्लास का टॉपर 98% मिला था, क्या हुआ मिलके एक वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं. And now that the vaccine is here, some people don't want to get it. What the fuck? Legit, I have some friends who are so ignorant about this and doesn't want to get the vaccine at any cost. And yet I clearly remember them last year saying things like, ये सब क्या, कैसा साइंटिस्ट लोग हैं, सब एक वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं, इतना समय लग रहा है. Look at the amount of hair fall. Not long before I go bald. Also, घड़ी बंद है कल से, अभी 11:30 नहीं बज रहे. There are 2 types of people in the world right now that makes me want to kill people. One who say they're not gonna get the vaccine because they just don't want to, and 2 people who would walk around in the public without their mask on. और जब कोई पूछते हैं उनको कि आप मास्क क्यों नहीं पहने हो, they be like, अरे हमारे पॉकेट में है मास्क, हमें कोरोना नहीं होगा, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. Boils my fucking blood, bro. Okay, I'm gonna leave now. On my way to get vaccinated, you. Wanna see my Aadhaar card photo? No, I won't show you. Okay, I will show you. First dose done. I'm partially vaccinated. Woohoo! So post-vaccination update. I feel nothing except a little bit of tingling sensation in my arm. It's like what I'm feeling in my arm. I can't call it pain. It's not pain. It's like a mild discomfort. Like this arm feels a little bit heavier than this arm. Weirdly. I'm not being able to explain it, so I'm gonna stop. But it's nothing to worry about. कोई भी इंजेक्शन लेने के बाद हाथ में थोड़ा दर्द तो होता ही है. कोई फीवर, सर दर्द कुछ नहीं है as of now. अभी बस like 1.5 घंटा ही हुआ है वैक्सीन लेके. I feel exactly how I was feeling this morning. मेरे पापा को भी वैक्सीन लेने के बाद कुछ नहीं हुआ except a little bit of arm pain. मेरे मम्मी को तो हाथ में भी कुछ फील नहीं हो रहा है. She is totally fit. कुछ भी नहीं हो रहा. मेरी माता जी Wonder Woman. And I'm not even Stuart Little. Let's Google fun things to do after taking the vaccine. Everywhere it says to drink water and take rest and sleep. I mean, what? I searched for fun things to do. Google taking rest and sleeping. Isn't that fun? I mean, मैंने वैक्सीन लिया क्या बस सोने के लिए पूरा दिन क्या? One eternity later. बहुत सो लिया. Update. I still don't feel anything bad except the mild discomfort I was feeling in my arm previously. अब वो discomfort थोड़ा और बढ़ गया है. मैं ऐसे यहाँ दबाऊँ तो it hurts. But I'm a strong woman. I'm a bad bitch. I can handle a little bit of arm pain. Did you guys see that news जहाँ वैक्सीन लेने के बाद वो आदमी का पूरा बॉडी मैग्नेटिक हो गया? That's so fucking absurd. न्यूज पे ऐसे दिखा रहा था आदमी नंगा होके खड़ा है और लोग रैंडम चीजें उसके बॉडी पे लगा के चला.
I was laughing my ass off while watching that. Not gonna lie, I'm kind of hoping that happens to me. कितना cool होगा यार. I'll be on TV. With that magnet power, I can become a superhero, bro. मेरा superhero नाम होगा मैग्नेटिका. मेरा सुपर पावर वुड बी कि जब बुरे लोग हमला करने आएंगे तो मैं उनके सामने खड़ी हो जाऊंगी, तो उनके पास जो भी वेपन्स वगैरह होगा वो सब कुछ मेरे बॉडी पे आके चिपक जाएगा. तो फिर मैं अपने बॉडी से फिर उनका जो बंदूक है वो लेके फिर उनको मार दूंगी. Done. See, I have the whole fiction story ready in my head. Let's check if I have got the magnet superpower. It's time for the greatest experiment in the world. What the fuck? I'm disappointed. It's fine to not have superpowers. 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 You are still very cool, Mani, and I love you. तुम अब भी बहुत मस्त मनी हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ. This is weirdly one of my favorite time pass. Fuck. लानत है. लानत है? Bitch. कुतिया. My humor is broken. I will fuck you. मैं तुम्हें चोदूंगा. Oh my God, Google, you naughty girl. मुझे माफ करना डैडी, एक बुरी लड़की होने के लिए कृपया मुझे दंडित करें. R.I.P. that pussy. I'm so sorry. I'm so sorry. R.I.P. that pussy. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. मुझे जॉर्जिया में मेरे आड़ू मिल गए. ओ हाँ शिट. मुझे जॉर्जिया में मेरे आड़ू मिल गए. ओ हाँ शिट. Shitting through the city with a little funk and soul. थोड़ा दुर्गंध और आत्मा के साथ शहर में चमक रहा है. थोड़ा दुर्गंध और आत्मा के साथ शहर में चमक रहा है. Oh my God, you still eat chocos? How old are you, 12? End of the day update. I don't feel that good. I feel kinda tired-ish. Like I feel like I just finished a 10 hours long shift at a call center. I can see the headache coming my way. And मेरे इस हाथ में बहुत दर्द है. Still no fever though. Update from future money. I did have a fever that night. बीच रात में मेरी नींद टूटी and I was shivering and मेरी मम्मी मेरी टेम्परेचर चेक करी थी और बुखार आ गया था 100 डिग्री. माँ ने मेरे को दवाई दी, मैं वो खा के सो गई. नेक्स्ट मॉर्निंग बुखार और नहीं था, 98 डिग्री हो गया था. बट इतना बुरा हेडेक था कि मतलब क्या बताऊं. इट फेल्ट लाइक माई हेड वेड 50 kgs. ऐसे एक तरफ से दूसरी तरफ देखने में सर घूम जा रहा था और पूरे बॉडी में दर्द, पैर, कमर, नेक, आर्म्स. फिर दोपहर होते होते इट ऑल काइंड ऑफ वेंट डाउन. फिर दोपहर को आई टुक अ बिग फैट आफ्टरनून नैप और नींद से उठ के आई वाज टोटली फिट. मतलब गाना चला के पागलों की तरह नाच रही थी. दैट वाज इट. मतलब अराउंड 12 घंटा तक का थोड़ा दर्द सहना पड़ा बस. ओह, ऑल द जूसी स्टोरीज दैट आई एम गोना हैव अबाउट द पैंडेमिक टू टेल माय ग्रैंडचिल्ड्रन व्हेन आई एम लाइक 80 years old. Also comment shout out. Comment something funny which is actually funny and not something like this. I'm trying my best to entertain you guys, and if you guys don't do the same for me, I hate one-sided love. I'm ending this vlog here. अभी बस dinner करना है और सोना है. Thank you for coming on this journey with me and all the other journeys too. You have no fucking idea how much I love you. Just no fucking idea. Okay, bye.